अस्सलाम वालेकुम भाइयों। कैसे हैं आप लोग? कैसी तबीयत है? कैसे मिजाज हैं? नोटिफिकेशन का इंतज़ार कर रहा था, नोटिफिकेशन लेट गया है और इस वजह से मैं भी स्टार्ट करने में थोड़ी सी ताख़ीर हो गई मुझे। क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? अच्छा, ऑडियो वीडियो सही आ रही है? पहले तो मुझे ये बताना है आप लोगों ने, ऑडियो वीडियो में कोई मसला, कोई प्रॉब्लम? थैंक यू ज़ुबैर भाई। अच्छा, मैं यहाँ कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ, ठीक है। थैंक यू अदनान। वेटिंग फॉर 100 के, थैंक यू सो मच। आपका नाम समझ नहीं आ रहा मुझे। फिट है, चलें, गुड हो गया। असल में सीन ये हो गया कि पिछला जो नोट 10 सीरीज़ का लॉन्च इवेंट था ना, उसमें थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। और गड़बड़ ये हो गई थी कि मैं विंडोज़ से जो कि मैक पे मैं शिफ्ट हुआ हूँ, तो मुझे मैं समझता था कि ये वही होगा सीन, लेकिन यहाँ वो सीन नहीं था। यहाँ तो नज़ारे ही अलग थे बिल्कुल। तो वो नज़ारों में जो है ना, मैं घिर गया था और मैं ठीक से आप लोगों को अच्छी क्वालिटी लाइव की नहीं दे सका। लेकिन इंशाल्लाह आज अपनी गलती को सुधारेंगे और आपको वैसे ही लाइव सेशन जो है वो मिलेगा जैसे हम देते आए हैं। अच्छा जी, दो फ़ोन, कौन कौन से फ़ोन लॉन्च हो रहे हैं? एक्सपेक्टेड प्राइस नहीं, मैं कंफर्म प्राइस बता दूंगा यार, टेंशन क्या है सुभान। ये बताएं कौन 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 से फ़ोन लॉन्च होंगे। आज 6 बजे लाइव इवेंट स्टार्ट होना है। मैं, आपको पता है, थोड़ा सा मैं 5-10 मिनट पहले इसलिए आ जाता हूँ कि हम लोग आपस में ज़रा गपशप भी लगा लें, डिस्कशन भी कर लें। थैंक यू सो मच मोहम्मद बिलाल। तो जब तक आप लोगों की जो भी बातें हैं, जो भी एक्सपेक्टेशन है इस फ़ोन के हवाले से, स्पेशली पोको X3 प्रो के हवाले से, मैं प्राइस नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ये बता दूं कि बम फटने वाला है और बहुत ज़बरदस्त बम फटने वाला है। अच्छा, सबको सब पता है, मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, ये देखो। इतरत हुसैन, हाथ रजा, सबको सब पता है। वालेकुम सलाम अली रज़ा। देखते हैं पोको F3 की प्राइस। वालेकुम सलाम शहरियार, कैसे हैं शहरियार लालानी? थैंक यू सो मच, आपने लाइव को ज्वाइन किया। प्राइस पता है भाई, ज़ुबैर भाई को भी प्राइस पता है। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल कहते हैं एमोलेड। लेट्स सी ब्रो, क्या आता है हमारे पास। शहरियार कहते हैं हावर ब्रो, थैंक यू सो मच शहरियार, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइन। और आप सुनाएं, कैसे मिजाज हैं, कैसी तबीयत है? अच्छा जी, गेमिंग में कैसा होगा? ये आसिफ भाई, ये क्या पूछ लिया आपने? ये आपने क्या पूछ लिया है? अच्छा, यहाँ कमेंट स्लो आ रहे हैं या लाइव मेरे पास, मेरा ख्याल है मैं इसको फॉलो करूँ। गेमिंग में गेमिंग बीस्ट होगा ये, देखिएगा। वालेकुम सलाम असलम सागर। अच्छा, यहाँ मैं फॉलो करता हूँ, यहाँ सही नहीं आ रहे कमेंट्स। यहाँ सिर्फ लाइव सेशन को देखते हैं। अच्छा जी, मोहम्मद उज़ैर कहते हैं अंडर 40 के F3 आएगा, बेस्ट प्राइस होगी, आई नो। असलम सागर कह रहे हैं काफ़ी एक्सपेक्टेशन है सबको इस सीरीज़ से। और शाओमी, जो कि हम लोग देखते आ रहे हैं कि पिछले साल से बहुत ही ज़बरदस्त प्राइसेस हमें दे रहा है। सर आप क्या बोलते हैं, क्या होगी प्राइस? भाई प्राइस अच्छी होंगी, बता दिया मैंने ना। एकदम धांसू गेमिंग होगी भाई, बिल्कुल धांसू गेमिंग होगी। लाइव सेशन को शेयर कर लो आगे पीछे, ताकि और कोई अगर हमें ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर ले। और इस लाइव इवेंट को हम लोग जो है ना, आज गपशप भी करेंगे और लाइव इवेंट को भी देखेंगे, थोड़ी अपनी भी बातें करेंगे। कभी कभी मौके मिलते हैं इस तरह के लाइव। अब तो पहले तो मैं वीक में कर लिया करता था लाइव सेशन, अब मौका ही नहीं मिल पाता। 38 के, अहमद अली कहते हैं 38 के प्राइस हो सकती हैं, बट आई विल स्टिल वेटिंग फॉर मी 11 आई। शहरियार लालानी, मी 11 आई के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वालेकुम सलाम अलियान, कैसे हैं, खैरियत से हैं, तबीयत ठीक है? ऑफलाइन मार्केट्स में अवेलेबल कल से हो जाएगा। पोको अपना X3 प्रो जो है ना, तो वो कल से अवेलेबल हो जाएगा। माय फादर नेम इज़ सैयद अशरफ अली। फुल नेम क्या मतलब? 8 GB वेरिएंट लॉन्चिंग। जी हाँ, 8 GB वाला वेरिएंट भी लॉन्च होगा, 6 GB वाला वेरिएंट भी आज लॉन्च होगा। बहुत सारे कमेंट में मिस कर गया, उसके लिए माजरत। अच्छा जी, ATG अरसलान कहते हैं बैकग्राउंड में नॉइस आ रही है, और बस थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करें जी। और ये असल में बिल्ट इन माइक है, और ये थोड़ा बहुत नॉइस लेगा, और ये सिस्टम का अपना ही शोर होगा जो आ रहा होगा। तो आई होप कि बेहतर होगी, समझ में आ रही होगी। अगर ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो फिर मुझे बताएं कमेंट करके, अगर ऑडियो में ज़्यादा डिस्टर्बेंस है तो। असलम सागर कहते हैं चाय पीनी है शाहजी, चाय पिला दें असलम सागर। अच्छा सर, पोको F3 की प्राइस की कोई अपडेट्स? भाई अपडेट नहीं, कंफर्मेशन है यहाँ पे तो।
नोट 10 प्रो, रेस्ट इन पीस। अच्छा जी, नोट 10 प्रो और X3 प्रो 8 GB। X3 प्रो डेफिनेटली बेहतर होगा, लेकिन 8 GB वाला वेरिएंट फिर वो compete नहीं कर पाएगा। लेकिन अ, अपना क्या नाम है, पोको X3 प्रो जो है ना, वो मैं समझता हूँ कि फ़िलहाल अभी तो X3 प्रो मेरे हाथ में नहीं आया, लेकिन ये है कि कल तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह आ जाएगा। बट X3 प्रो ज़्यादा अच्छी चॉइस होगी। सर पोको X3 NFC ही मेरे पास है, कैसे अपग्रेड करें प्लीज़? कैसे अपग्रेड करें, क्या मतलब? अपग्रेड कर लें, वो बेचें, दूसरा खरीद ले, अपग्रेड हो गया। नहीं, ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं है। चलें, थैंक यू अलियान, थैंक यू सो मच। पीर साहब पोको F3 का बताओ आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। सैयद अम्मार, आपने पीर साहब बोल दिया मुझे। डिस्टर्बेंस नहीं है। थैंक यू अरसलान भाई, थैंक यू सो मच। सर बहुत ज़्यादा ही शोर। यार अब ये मुझे ना कंफ्यूज कर रहे हो आप लोग। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि शोर नहीं है, और अली रज़ा कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है शोर। तो मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ अब। मुझे नहीं समझ आ रहा कि शोर क्यों है। हाय भाई, आई एम खुर्रम। जी खुर्रम राना, कैसे हैं? तबीयत कैसी है? पोको F3 आज आएगा, बिल्कुल आएगा। सर पोको X3 और F3 आज ही लॉन्च होंगे या फिर एक आज, दोनों आज ही लॉन्च हो जाएंगे होपफुली। F3 के प्राइस बता दें? सब बताएंगे, अभी तो रुकें थोड़ा सा। लॉन्च हमारी जो लाइव सीरीज़ है, लाइव जो क्या कहते हैं सेशन है, इसको आप शेयर कर लें आगे पीछे। वॉइस ओके है आसिफ अली, थैंक यू। सर पोको F3 या पोको X3 प्रो? यार थोड़ा सा रुक जाएं। वैसे इनिशियली मुझे पोको X3 प्रो की जो स्पेक्स हैं वो ज़्यादा अच्छी लगी। F3 भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन प्राइसेस सामने आएंगी ना तो फिर सही से हमें पता चलेगा। हाय टेक्नोलॉजी इन, हेलो मलिक सईद, बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने लिखा है। शाहजी 50 के टू 65 के बेस्ट स्मार्टफोन कैमरा और परफॉर्मेंस गेमिंग नहीं करता मैं। 50 के से 65 के, अब तो पाकिस्तानी मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा मतलब है कि क्या कहते हैं क्या कहते हैं वैरायटी है वो आपको मिल जाती है। हर एक कंपनी इस प्राइस रेंज के अंदर घूम रही है। और रिसेंटली अभी और ज़्यादा फ़ोन जो है ना वो लॉन्च होने वाले हैं। तो ये पोको X3 प्रो आज लॉन्च होने वाला है, इसको देखते हैं। इसको असल में पता है क्या होता है, स्पेक्स अलग चीज़ होती हैं। अब मेन चीज़ होती है जब फ़ोन को हाथ में बंदा होल्ड करता है, उसको यूज़ करता है, इस्तेमाल करता है, तब पता चलता है ये फ़ोन कितने पानी के अंदर है। ठीक है। अभी आप आज मैंने रिसेंटली एक कंपैरिजन वीडियो जो है वो मैंने अपलोड की, आप लोगों ने देखी होगी डेफिनेटली। उसमें मैंने यही चीज़ आप लोगों से यही बताना चाहा है कि ऑन पेपर स्पेसिफिकेशन देख लें, और जो मेरा अपना पर्सनल जो मेरा यूजेज था वो मैंने आप लोगों से शेयर किया। मोहम्मद फरहान खान, वालेकुम अस्सलाम। तो देखें इस तरह कंपैरिजन, अभी जैसे पोको X3 प्रो है, ये आएंगे जब हम इसको रिव्यू करेंगे, मेन चीज़ रिव्यू करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये बाकी जो फ़ोन जो आ चुके हैं मार्केट पे उनके मुकाबले में ये बेहतर है या नहीं है। लेकिन स्पेक्स जो इसकी हैं वो जो बताती हैं तो डेफिनेटली वो बेहतरीन होगा। जी हाँ, आज ही आएगा अम्मार। खुर्रम राना कहते हैं रेडमी नोट 10 प्रो और मी 11 लाइट। नोट 10 प्रो, मी 11 लाइट में आज की वीडियो में आप लोगों ने देख लिए होंगे जो मैंने डिस्कस किया। जितने कमेंट्स हैं लाइक भी होने चाहिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुल हसन भट्टी। जितने कमेंट्स हैं जितने लाइव हैं लोग हैं, इतने ही लाइक्स भी होने चाहिए। अच्छा जी शाहजी, F3 का वेट करें या रेडमी नोट 10? आज आ रहा है ना भाई, वेट कर लें अब क्या, थोड़ा सा रुक जाए। मी 10T बेटर है या पोको F3? बिकॉज मी 10T की प्राइस ड्रॉप हो गई है यार। मी 10T बहुत अच्छा हो गया इस प्राइस रेंज में। और अभी रिसेंटली मैंने एक कंपैरिजन वीडियो बनाई थी, गालिबन A72 के साथ शायद बनाई थी। तो उसको देख के तो मैं बड़ा वो हुआ था, मतलब वो एक बेहतरीन आप कह सकते हैं कि टक्कर देने वाला फ़ोन है इस प्राइस रेंज के अंदर। अच्छा जी, हाँ ये अच्छा होगा। F3 का वेट कर लें। मोहम्मद उज़ैर, F3 का वेट कर लें। मी 10T बेटर है या? अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नोट 10S की स्पेक्स क्या होंगी? नोट 10S सैमसंग की बात कर रहे हैं? 90 हर्ट डिस्प्ले, मैं नहीं समझा। प्रिंस किंग पूरी बात कर लें, मेरा ख्याल है आप अधूरा मैसेज कर गए। जितने कमेंट्स हैं शाहजी F3 का वेट करें। अच्छा, और कोई सवाल है या कोई राय है आपकी, कोई सजेशन है तो वो बता दें। और टॉपिक से हटकर भी कोई बात करना चाहें तो कर सकते हैं हम, कोई इशू नहीं है। वेल डन सर, गुड रिस्पॉन्स फॉर योर व्यूअर, थैंक यू। गुल हसन भट्टी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, एक मिनट यार, मैं जिस मकसद के लिए आया वो तो देख लें। लाइव इवेंट को देखते हैं साथ साथ, स्टार्ट हो तो फिर मैं आपसे वो शेयर करूँ। रेडमी नोट 10S
अच्छा अच्छा, रेडमी नोट, सॉरी यार वो तो मैं भूल ही गया था, वो अभी अप्रैल में उसका है रेडमी नोट 10s। और वो मतलब एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है 10 प्रो के मुकाबले में अगर हम देखते हैं। सॉरी यार, मैं उस तरफ मेरा ध्यान नहीं था। अल्ताफ़ खान, थैंक यू सो मच, आपने रिमाइंड करा। एक्स थ्री प्रो और एक्स थ्री प्रो और F3 आ जाने दें ज़रा प्राइसेस वगैरह, फिर देखते हैं। सर पोको F3 कब लॉन्च होगा पाकिस्तान मार्केट में? आज ही लॉन्च होगा भैया, सब लॉन्च होंगे, फिक्र नहीं करें। अच्छा, मैं एक मिनट ज़रा रिफ़्रेश कर लूँ पेजेस, क्योंकि काफ़ी डिस्टरबेंस है, कुछ कंफर्म नहीं है कि लाइव कहाँ से आएगा इस बार। तो मैंने तो यहाँ सारे ही मतलब जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको खोल के रखा हुआ है, ताकि हम देख लेंगे कहाँ से लाइव है और उसको जो है ना हम पकड़ लें। शाहजी सोने लगे, शाहजी सोने लगे पर थैंक यू सो मच। आपने वो पंजाबी लैंग्वेज में लिखा, मैं क्लिक नहीं कर पाया। थैंक यू सो मच अम्मार, थैंक यू सो मच। इट्स 6 p भाई, बाल बनवाए हैं, खर्चा किया है, अभी भी सोने नहीं लगेंगे। रेडमी नोट 10 प्रो वर्सेस पोको X3 कौन सा बेस्ट है? पोको X3 बेस्ट होना चाहिए। आने दें ज़रा, मतलब प्राइसेस सामने आने दें। ये हंस कौन रहा है? रज़ा को बहुत हंसी आ रही है। सर मैं आपका बिग फैन, थैंक यू सो मच अली रज़ा। आप उसी वक्त आंसर दे देते हैं, बाकी जो भाग है अच्छा लेट करते हैं। उज़ैर अवान F3 भी रेडमी नोट 10 प्रो की तरह आउट ऑफ स्टॉक? नहीं, F3 तो खैर नहीं होगा आउट ऑफ स्टॉक, मेरा ख्याल है। देखें, रेडमी नोट 10 प्रो मैंने पहले ही आपको कहा था कि स्टॉक की गड़बड़ हो सकती है। मैंने किसी एक वीडियो में कहीं ना कहीं आप लोगों से शेयर की थी ये बात। तो जिसने सीरियसली ले लिया था तो बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं लिया था तो कुछ नहीं कह सकते। iPhone 7 कैसा है प्लीज़? आईफोन 7 तो नहीं लो, उस प्राइस रेंज में कोई एंड्रॉयड ले लो यार, बहुत अच्छा हो जाएगा। सर रेडमी नोट 10 प्रो की उम्मीद रखें आने की मार्केट में? 10 प्रो की नहीं, 10s की उम्मीद रख रहे हैं फ़िलहाल। 10 प्रो का जो है ना मामला अभी ज़रा डिले है। अच्छा जी, यहाँ तो अभी शुरू नहीं हुआ, 6:04 हो गए हैं। और पेज रीलोड हो जाए ज़रा। रेडमी नोट 10 प्रो की तरह F3 भी आउट ऑफ स्टॉक? नहीं, मेरा ख्याल है ये नहीं होगा, श्योर नहीं है। कौन सा लूँ, कौन सा लेना चाह रहे हैं भाई? लाइक डन फ्रॉम 3 IDs, थैंक यू सो मच प्रिंस किंग। यार आप जिससे देख रहे हैं उसी आईडी से लाइक कर लें, थैंक यू सो मच। अरे हाँ, बड़े मज़े की बात याद आया, रमज़ान आने वाले हैं भाई, और उसमें रमज़ान में आप लोगों को पता है मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ गिव अवे, ठीक है? और तैयारी पूरी हो गई है। बहुत जल्द इंशाल्लाह एक डेडिकेटेड वीडियो आप लोगों के लिए आएगी, जिसमें मैं आप लोगों से शेयर करूँगा जो भी गिव अवेज़ हैं। तो डेली इंशाल्लाह एक वीडियो, डेली एक गिव अवे होगा। अनाउंसमेंट वही ईद के बाद इसी तरह लाइव करेंगे हम, गपशप भी रहेगी, और लाइव जो है ना हम जो विनर होगा उसको निकालेंगे। उसमें ये होगा कि कोई शक वाली बात नहीं होती, जो होता है लाइव ही हो रहा होता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अगर इन केस मैं डेली वीडियो ना कर पाऊँ किसी वजह से, तो फिर ये है कि एक दिन में 2 गिव अवे हो जाएंगे, ठीक है ना? तो उसमें ये होगा कि हमारे गिव अवे भी वो नहीं होंगे, डिले नहीं होंगे, और काम भी चलता रहेगा। यार अभी तक शुरू नहीं हुआ है। अच्छा जी, तकरीबन शुरू होने वाला है लाइव इवेंट, और सॉरी मैं उसी में लगा हुआ था, इस वजह से मैं थोड़ा सा डिले कर गया। एक वीडियो है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, उसको देखते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। नहीं, अच्छा जी,
पूछते रहो यार, सवाल पूछते रहो, बातें करते रहो जब तक। शाहजी, आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह क्या होती है? आउट ऑफ स्टॉक होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं। इस बार जो वजह थी वो बहुत ख़तरनाक थी। हाँ, आज ही लॉन्च होगा इंशाल्लाह। एक मिनट में एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद लाइव इवेंट की तरफ चलते हैं, ठीक है? लाइव इवेंट शुरू हो गया है, मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। 2 मिनट रुकें, ज़रा सेटिंग कर लूँ और उसके बाद फिर। तो बहुत बुरा चल रहा है यार। अच्छा जी, 1 मिनट में ज़रा स्क्रीन सेट कर लूँ और आप लोगों को ऑडियो भी। अच्छा देखें, इवेंट की जो ऑडियो है वो आप लोगों को आ रही है? If not the best. To give you an idea of why this is impressive, let's take a look at a comparison. Now, if we take one of the most commonly used 4G processor in the market in the last year or two and compare, Snapdragon 720G has an average ANTU score of almost 280,000, is 76% in difference compared to the 860. The performance difference is massive. But not only that, let's compare it with another 700 series, the Snapdragon 765G, which is a 5G chipset, one of the best processor in 700 series. Regardless of 4G or 5G, the difference is still very obvious. Snapdragon 860 has 52% better performance. Now, some fans across the stream may be
ऑडियो बताएं मुझे, ऑडियो इवेंट की सही आ रही है आप लोगों को? कोई प्रॉब्लम, कोई मसला तो नहीं है? मुझे कमेंट करके बताएं प्लीज़। Standard for mid-range smartphones. At Poco, we are raising that standard and showing our fans it's most certainly possible to put a 800 series in the mid-range segment. It's simple. Poco X3 Pro offers flagship 4G performance, but processor isn't the only part we have made a change to. We also added UFS 3.1, which is a standard in high-end flagships these days, but pretty rare in the mid-range. Having UFS 3.1, you can get write speed up to 198% faster than 2.1. It's the perfect combination with the 860. And for our UFS 3.1, you can now get up to 256 GB of internal storage compared to last year's Poco X3 NFC. It's an upgrade from 128 GB. We also have shocking expandable storage up to 1 terabyte. That's amazing. You could potentially have almost 1.3 terabyte of storage space on the Poco X3 Pro. Just think about it for a second. That's more storage space than most standard laptops. Of course, we didn't forget about RAM. From 6 GB option only for the Poco X3 NFC. We are giving more RAM as well in the Poco X3 Pro, up to 8 GB, flagship level RAM size. So actually, we didn't just upgrade 4G performance. We did the whole package, offering a complete flagship performance. Snapdragon 860, the leading 4G processor, up to 8 GB of RAM, flagship level, and UFS 3.1 up to 256 GB and still kept expandable storage and pushed it to 1 terabyte. All of these performance providing more speed and power for your daily usage. Powering all of this, we still have a huge battery of 5160 mAh, offering easily 2 days battery. I remember seeing a lot of great comments about how good the Poco X3 battery is, and many people claiming this is one of the best battery phone out there in the market. Even with the 800 series processor, we are still getting great single usage time. 11 hours of gaming, 117 hours of music, 18 hours of video playback, and almost 6.5 hours of 1080 pixels video recording. And when you do need to charge, it really doesn't take long. With our MMT 33 watt fast charging, the Poco X3 Pro can reach 100% battery in just 59 minutes. Now, I used to be the type of person that likes to leave my phone charging overnight. But now, the battery can last over 2 days easily. I usually charge it in the morning, and when I wake up and when I leave for work, it's all juiced up. Super convenient. Poco X3 Pro, more performance with flagship 4G processor, flagship 8 GB RAM, flagship UFS 3.1 storage up to 256 GB, that awesome 5160 mAh battery with 33 watt fast charging. And of course, we did keep the liquid cool technology 1.0 plus for sustainable performance. This is exactly the performance you need and more. Now, thanks to the performance upgrade, the Poco X3 Pro can get even more creative than before. Using the 860 with the AI performance boost, more software features are available. Let's take a look at Poco X3 Pro's camera.
Poco X3 Pro still features a quad camera setup, a 48 megapixel main camera, using the Sony IMX582 sensor, 119-degree ultra-wide angle camera, a macro camera and a depth sensor. Let's check out some sample shots. First is the main camera. We took a part of a bike and shot the gear setup. As you can see, the focus and the coloring on the gear is on point. How different light in the background give it shades on the metal finish. But if we go closer, we can see some really cool details. Once you use a macro camera and shoot closer, you can actually see the water droplets on the gears. Super small details can be seen with the macro mode. Then we have portrait shot with the depth sensor. With this mode, you can see how it captured with great details and blurring the background, only focusing on the model. Very easy to use. And we have the 119 ultra wide, which is great for architecture shots like this. You can see how even with the wide angle, you can still maintain the brightness contrast. But with Snapdragon 860 AI capabilities, with which we can capture not just during the day, but also night. In this photo, with ultra wide night mode, when you're in a dark environment with lights, it actually boosts the brightness contrast while maintaining the colors. This mode is honestly great when you're trying to take night scenery shots of cities. But most importantly, we do have the video features that's powered by the Snapdragon 860. Let's check it out. That was an awesome dual video mode. To support this mode, we also have a 20 megapixel in-display front camera, in which we also added a new feature, night mode selfie. I don't usually take selfies, but when I do, I often find myself usually taking selfies in a pretty dark environment, whether if it's a restaurant or outside in the street lights. This mode helps increase the contrast while keeping the clarity. This is Poco X3 Pro's camera with more software features powered by the Snapdragon 860 and maintaining a quad camera setup from the last generation. You will get a lot of versatile content to play around and rule over the social media space. Make sure you go explore other amazing features in the Poco X3 Pro, which are a lot. Now, for design, we have also changed a little. The Poco X3 NFC was a unique looking device, but we wanted to make it even cooler than before. First, we still kept the Poco reflective chroma design, still a standout design and very cool. And we kept it symmetrical. We called it the finish line design. But it wasn't perfect. We saw some complaints about the back design, such as a lot of Fingerprint fans aren't using the case. Well, we made a change. For the Poco X3 Pro, we used a dual texture in the back. On the sides, it has a matte finish,
to prevent fingerprints. But not only that, we also added 3 new colors. We have Phantom Black, Frost Blue, and Metal Bronze. All 3 colors are new and refined, a more complicated color process than before. My favorite is actually the Phantom Black. It has a touch of purple to it under the light, but the blue and metal bronze is pretty awesome looking too. Very eye catching. Let us know which color you like in the comments below. We've talked about the back design. Let's actually briefly take a look at the front display. For our Poco X3 Pro display, we kept the 6.67 dot display, keeping it super immersive. We still have that tiny dot at the top, same size as the previous generation and the Poco X3. It's still a flagship level display that features 120Hz refresh rate and 240Hz touch sampling rate. Still great for gaming and daily usage when you're scrolling through Instagram or Twitter. And Poco X3 Pro still kept the dynamic switch, an awesome smart tech that helps saves battery by automatically adjusting each content you view to its most optimized frame rate. I personally thought this was one of the smartest features on the Poco X3 NFC. Overall, Poco X3 Pro still has an amazing screen, but we still took it to the next level. On the Poco X3 Pro, we added Corning Gorilla Glass 6, giving flagship level display protection. For those who don't know how good the Corning Gorilla Glass 6 is, it is the level between Corning Gorilla Glass 5 and the latest Victus. To give you a rough idea, Corning Gorilla Glass 6 is a true flagship feature. Phones that are priced above 2 lakh rupees has it. And so does Poco X3 Pro. Impressive, right? To sum up Poco X3 Pro's design, we have 3 new colors: Phantom Black, Frost Blue, and Metal Bronze. All 3 looks really good. Anti-fingerprint sights to keep it more clean. A massive 6.67 inches dot display that has 120Hz refresh rate and 240Hz touch sampling rate, protected by the Corning Gorilla Glass 6. Exactly the design and display you need, and more. We have upgraded Poco X3 Pro to not only offer exactly what you need, but more performance, more creative, and more design. But we did keep some of the great features from Poco X3 NFC. The dual speaker setup. With the Poco X3 Pro, you're still getting great audio no matter what you're doing, gaming or watching videos or listening to music. And I say it's great audio with confidence because it was actually tested by DxOMark Audio. For our X3 NFC speakers, we were able to get a DxOMark Audio score of 63. Now that may not seem super impressive just by itself. But what about this? If we take a look at some of the flagships from last year and also tested for DxOMark Audio, the Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G scored a 68, just a little bit above Poco X3 NFC. But look at the price difference. We are pretty much on the same level as flagships. And when it comes to touch, we still have a great Z-axis linear motor. Super responsive when you're gaming and giving you the ultimate feel experience. Still uncommon to see in the mid-range smartphone range. Last, some essential features: IR blaster, NFC, and headphone jack. Features that we believe are still very much needed based on the demands we see from the users. Poco X3 Pro has it all. So,
we kept some great features from the Poco X3 NFC. Big battery of 5160 mAh with 33 watt fast charging, 120 Hz refresh rate and 240 Hz touch sampling rate on the 6.67 inches dot display. Dual speakers, Z-axis linear motor, NFC, IR blaster and headphone jack. The features that we had in exactly what you need. And when it comes to more, a 800 series processor, 860 leading 4G processor, up to 8 GB of RAM, up to 256 GB of internal storage of UFS 3.1, Great. Corning Gorilla Glass 6 and quad camera with more software features. This is कुछ नहीं छोड़ा भाई इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा. So now let's have a look at the Poco X3 Pro. Price, because I believe we won't disappoint our fans, offering a great price like we did for the Poco X3 NFC. But let's do a comparison first. Now, if we take a look at some of the popular mid-ranges in the market in 2020, we have highlighted our strong points. Flagship 860 processor, big screen with high refresh rate and touch sampling rate, huge 5160 mAh battery and 33 watt fast charger. Their price is roughly starting at 60,000 rupees and more. But let's not just compare to others. There is an old saying, it only matters when you've outdone yourself. So let's take a look at our previous generations with a massive processor upgrade, RAM upgrade and storage speed upgrade, and maintaining all the beloved features. Our 6GB plus 128GB storage option for the Poco X3 NFC had a RRP of 41,999 rupees, and we did an early bird of 40,999 rupees, which at the time I believe shocked many fans. I was shocked myself. For the Poco X3 Pro, for our base variant, the 6GB plus 128GB storage option, we have an amazing price of 41,999 rupees. I'm so curious how many of our fans jaws dropped across the stream, or maybe even said, what? But actually, we're not done. We've always got that early bird. 41,999 rupees? Initially, this was the early bird price. But remember, we had a shocking achievement of 4 million Poco X3 NFC shipped in just 7 months. We want to thank our fans, so we tweaked the early bird price. We actually have an early bird pricing of 39,999 rupees. I'm confident many fans are commenting like crazy right now because I was hyped myself when I heard that we were able to do this. And what made me even more shocked was when I looked back at this. If we take a look at this chart, the upgrades, then the retail price and the early bird price compared to previous generation, can you see how amazing and crazy this pricing was? And now for a high-end variant of 8GB plus 256GB of storage, we have an amazing price of 47,999 rupees. Truly great value. So when we come back to this chart and see our early bird pricing or even the retail pricing, we beat our competitors in most of the features and we're almost half the price. This is how we do it at Poco. Now the Poco X3 Pro will be available from tonight on all of our exclusive online partners, the Raz, Mistore.pk, OLX and Aircart. And the 8GB plus 256GB variant
will also be available nationwide from tomorrow onwards with the support of all our offline distributors, Airlink, SmartLink, Texera, and Fonzo. We will also be offering a free of charge one screen replacement within 6 months of purchase. So, here it is in summary. Poco XC Pro Edition starting at 39,999 rupees. Early bird for the 6GB variant and 47,999 rupees for the 8GB variant. Flagship 4G performance with awesome features and a crazy price. Exactly what you need and more. Now, I know these questions are happening right now in the stream and has been happening over social media as well. Poco hears our fans and it's here. We understand how important F series is for our fans. F series started the journey, the series that caught the eyes and attention of fans and media in the industry, disrupted the market and established what we're doing here at Poco is very important. Today, we will be launching the latest F series, the long-awaited Poco F3, and the team came up with one term to really describe what the चलो भाई Poco F3, the real beast. Let's get started. Let's talk about this real beast. I know our fans can't wait. Performance, the one spec I know fans want to hear first, and maybe the most important for F series. For the Poco F3, we have put an immense amount of consideration of which processor should be used. And this one choice was perfect. The Snapdragon 870, one of the latest Qualcomm 800 series chipset. In short, I can tell you the Snapdragon 870 offers beast speed. It's very fast and very capable. Now let me explain some of the details of this specific system on chip and what makes it special. First, the Snapdragon 870 uses an octa-core structure with 3 different types of cores. A similar structure of the flagship system on chip from last year 865. We have 1 prime core, 3 performance cores, and 4 efficiency cores, a flagship structure. And of course, we are also a 7nm process, making this 870 chip very power efficient. Tiny but mighty. But there is something special that makes 870 even more beast-like. And that is its prime core. It's special because the Qualcomm Snapdragon 870 have a leading prime core speed of 3.2 GHz. If you take a look at other flagship processors in the market, it takes the number 1 spot. But what does prime core speed actually do for us users? Compared to last year's flagship system on chip, the Snapdragon 870 has improved by more than 12% CPU performance, processing any apps with ease and offering true beast speed. And when it comes to gaming, the GPU structure using the Adreno 650, by using this structure and paired with a prime core, the GPU experience has also improved. More than 10% improvement on 865. For some of you, this may seem like a small number, but I've used the Poco F2 Pro all year last year, and I did some heavy gaming on it. My settings were always on high or max graphics, and it handled with ease. To think that there's further improvement on this, it's pretty wild. We also did do a gaming test with Genshin Impact, and the result was amazing. We ran the Poco F3 on high settings with 60 frames per second, max, and played for 1 hour straight. With the Poco F3, you can get an average of 58 frames per second. Now that's
beast gaming. To support that support, we needed to keep the beast cool. So we added liquid cool technology 1.0 plus, which really helps with long period of heavy load usage, keeping the processor cooler, allowing it to run longer and smoother. But not only performance, the Snapdragon 870 is great at when it comes to AI processing. The F3 can reach 15 trillion operations per second. It's expected from a flagship system on chip, taking and editing photos, videos with ease and making your overall experience just so much smoother. Then the question is how great the Poco F3 can do in a 2-2 benchmark. It scored a super high score of 640,000. A true flagship system on chip, a real beast. Compared to last year's Snapdragon 865 score that we got in Poco F2 Pro, it has quite the improvement over the flagship processor of the last year. 50,000 points in difference. So, to sum it all up, the Snapdragon 870 in the Poco F3 is one of the best processors in the industry right now, offering beast speed. But we are not done just yet. Now, to pair with such an awesome processor, we had to also match up to the RAM and ROM technology with up to 256 GB of UFS 3.1 and up to 8 GB of LPDDR5 RAM, offering beast ROM and RAM. And when it comes to connectivity, the Poco F3 is also 5G ready, up to 23x faster speed compared to 4G, and also compatible with 11 different network bands. It supports Wi-Fi 6, which is 2.7x faster than Wi-Fi 5. So when you're home or at the office, your connection is super fast. No lag during gaming, no buffering for videos, beast speed only. Now, this is Poco F3, the real beast performance. Snapdragon 870, which features a 3.2 GHz prime core speed, one of the best processors in the industry. Flagship ROM and RAM, 5G and Wi-Fi 6 ready. Now, we talked about how beast Poco F3's performance is. I think many people may be asking, what about display? I can tell you with all the confidence in the world, we have a real beast display. Fans out there, you won't be disappointed. What we had to make sure first is the screen gotta be big. A beast screen size, 6.67 inches, comfortable for daily viewing and any sort of gaming or content watching. Then we decided to go with a flat screen. Now, as some of Poco fans know, I am a gamer, and as a gamer, I actually can't stand missed touches. And with a flat screen, the chances of mistouching an edge is close to none. And to guarantee a full screen experience, we decided to go with a dot display. It was a decision made by how many fans appreciated and enjoyed the viewing experience from X3 NFC. How small the dot was? Well, for Poco F3, we took it to the next level. The Poco F3 has a 2.76mm dot display. Super small. If we take the Samsung Galaxy S21's dot display, for an example, it has a size of 3.61mm. Our 2.76mm tiny dot is industry leading tiny dot, making sure it's as immersive as it gets. Now we talked about how big and immersive the screen is. Our screen is also the Poco F3 6.67 inches screen is indeed AMOLED. This was a big ask by fans on Twitter and has been all over the media. And we heard you.
But not just any AMOLED. It's an E4 AMOLED. Flagship level. One of the best screens out there. For some fans who don't know what E4 AMOLED is, let me break it down. It has a peak brightness of 1300 nits, a contrast ratio of 5 million to 1, and high brightness level at 900. So the colors will be bright and vibrant even under the sun. And compared to last generation's AMOLED material, E3, E4 is actually uses 15% less power, which helps conserve battery in general. A true beast display. It also supports true color, which is tuning the color of your content to the most realistic accuracy. A must-have feature, especially when you're watching lots of content. For me, I love documentaries like Planet Earth, and watching it on the screen brings everything to life. And as a beast flagship display, it also have HDR10 Plus, giving our users crystal clear clarity for all their content. Let's take a look at the effect. If you take a look at the comparison, you can see that with HDR10 Plus, the video quality is even more vibrant and clear. It optimizes each frame to the best brightness possible, even the parts of the video where it's dark. MEMC, this is an awesome feature. Let's demonstrate it. What MEMC does is intelligently analyze video as you watch, creates additional frames to give you a smooth, clear video better than you would have had without. It's amazing. On top of all the great features we also have a 360-degree light sensor. It can detect the lighting environment around you and adjust the brightness automatically. Actually, we took it one step further. To protect your eyesight and making sure when staring at your screen during different environments, we have true display technology to ensure not just the brightness we are adjusting, but also the color warmth on your screen. Honestly, when I use my phone all day and all night, which I do a lot, I really appreciate this feature. Less stress on my eyes. With all of these features, the Poco F3 display is not only just flagship level, it's really one of the best displays in the industry. With a 6.67 inches flat display featuring a dot display design, 2.76 millimeter tiny dot, an E4 AMOLED that supports all the optimizing features. This is the F3's real beast display. Well, we got to talk about the real beast gaming. Now, having the awesome 870 processor and a widely quad screen is going to be quite the combo for our gamers out there. Well, we've got more for you. First, our screen has 120Hz refresh rate. On top of the E4 AMOLED we just talked about. 120Hz plus E4 AMOLED. Crazy good. But 120Hz is actually pretty common in the flagship segment. So let's take a further notch. Touch sampling rate features a super high touch sampling rate. 360 Hz. Absolute beast. Now 360 Hz is one of the industry's highest touch sampling rate. And it's crucial feature for the gamers out there. With this, you can stay one step ahead among your enemies or friends in your gaming. To give you a reference of how good 360 Hz is, we can simplify like this. 120 Hz to 180 Hz are usually in the average entry mid-range smartphones. Hitting 240 Hz, there are some flagships and performance phones out there. But 300 plus
You're reaching a whole new level now. Let's take a look at the comparison against one of the flagship devices on the market, S21, which features a 240Hz touch sampling rate. And for our beast gamers, we also have Game Turbo 4.0 on the Poco F3, which has an awesome advanced GPU tuner that allows you to tweak in-game settings in one place. So it makes adjusting graphics settings much easier. We're not quite done yet. To take it up to the next level, we also have two speakers set on the Poco F3 and essential for gaming. Honestly, I've used a single speaker phone for a while, and when you're wielding it horizontally, you would sometimes block the speaker and the sound is just gone. Very irritating. But with the dual speakers, you're getting a louder audio and it's less likely for you to block both speakers. But this beast speaker is special. It's got Dolby Atmos to make the sound even better, making your audio experience better than you expect, fully optimizing the stereo sound from the dual speakers. Other than Dolby Atmos, we have high resolution audio and high resolution audio wireless that works in harmony with our dual speakers. This is a real beast audio. And lastly, we can't forget the feel of the phone. This is a huge part of the overall experience for the device. How it feels when you click each button. For a lot of influencers and tech enthusiasts, this is one of the features that can immediately separate a good phone and an average phone. By using the X-axis linear motor, you're getting a crisp feedback from every touch. To sum up the F3's beast gaming performance, at the core we have the Snapdragon 870, 120Hz refresh rate, flagship, 360Hz touch sampling rate, simply groundbreaking. Game Turbo 4.0 that helps you optimize graphic with ease. Dual speakers that is working alongside with Dolby Atmos and high resolution audio in high resolution audio wireless. X-axis linear motor, a flagship feedback hardware that makes the whole experience just so complete. This is Poco F3's beast gaming experience. We talked about how fast the Poco F3 real beast is, how powerful, how smooth, but how beautiful. Let's talk about the real beast design, because I can tell you for certain there is beauty in this beast. Let's take a quick peek. Let's start off with these two classy colors, simply elegant. First, we have the Poco F3 in night black. Now, being the real beast, this elegant black is so stealth. It's as if it's ready to hunt you in the night. Absolutely gorgeous. Then we have the Poco F3 in Arctic white in a matte finish. Imagine if it was a beast running across a snow plain. Now, personally, ये वाइट कलर अच्छा होगा, ये वही वाइट कलर लग रहा है मुझे जो Redmi Note 10 में आया था मेट फिनिश के साथ, ये ज़्यादा अच्छा होगा. actually have another color, a different beast. Unleash the Kraken. Now, when we first came up with this color design, we imagined it as a beast from the ocean. Let's take a look. This is Poco F3 in deep ocean blue, the great blue beast. Now this blue, man oh man, we pushed our ID design to the limit. It's not just one blue, it's three different blue altogether and with different tone and design. I honestly think this is one of the coolest design phone I've ever seen. Elegant, different, powerful. Let us know in the comments which one do you think. But besides making this beast beautiful, we also considered how it feels, how it weighs.
For the Poco F3, it's super thin, only at 7.8 millimeters, Good. making it a thinnest Poco phone ever. And it only weighs 196 grams. So the overall feel of this device is very light and comfortable to hold. But what actually makes our beast even more impressive, we managed to put in a huge battery of 4520 mAh in the Poco F3, which can last for 2 days of usage. Remember, considering the fact that we have a 870, a 120 Hz refresh rate with AMOLED and a thin design, and now a big battery to support it to last usage for 2 days on a single charge. Impressive, right? So, the beast is light yet powerful. 7.8 millimeter thin with a big battery of 4520 mAh. One of the few devices on the market that is this thin with a battery this size. Beastly designed and built. The Poco F3 4520 mAh gives you 10 hours of gaming, 14 hours of video playback, 149 hours of music, and 23 hours of phone calls. And when you do need to charge up, we have 33 watt fast charging, which only takes 52 minutes to 100%. That's less than an hour, and you'll be good to go. Of course, we do include a 33 watt inbox charger as well. On the side, we have further refined our side fingerprint sensor. We have flattened the usual fingerprint design and made this more seamless, made it more elegant and clean. To sum up the F3's design, we've got 3 beastly colors: Arctic White, Night Black, and Deep Ocean Blue. Honestly, any 3 of these colors match any style. Only 7.8 millimeters thin and 196 grams, paired with a big 4520 mAh battery that supports 33 watt fast charging. Very few in the market. Corning Gorilla Glass 5 to have a sturdy build all around. A new refined side fingerprint sensor. This is Poco F3's real beast design. And let's get on with the camera. We have a triple camera setup on the Poco F3. A 48 megapixel main camera, 8 megapixel ultra wide that supports 119-degree ultra wide field of vision, and my favorite, a Tele Macro camera that has an autofocus between the distance of 3 centimeters to 7 centimeters, really allowing you to capture close and clear. Let's see through the eyes of the beast. When you use the Poco F3 main camera, now you can get really detailed shots like this. Now, if you take a look at this picture closely, first you can see how detailed the architecture is. But it also captured the light reflection of the metal perfectly. As our model is holding the light stick on the right side, you can see that the ratio of the light bounced off the metal on the right side is brighter than the left. Details are sharp with the Poco F3. Then we also have a night mode shot with the main camera, with the lights all around our model. Turning on night mode gives you more contrast accuracy on the photo. Very cool shot. Then we have ultra wide, which allows you to capture a lot more when you're at a distance and trying to capture something very large. Turn on that ultra wide to capture the full picture. Now, my favorite, Tele Macro shot. Now at first you may think this is a glass globe with binary numbers design on it, but actually we placed a transparent glass marble ball on a glass surface and shot the reflection on the display in the back. Super creative.
Tele Macro shots can always make the picture seems like it's a whole different object. We used a similar scenario and changed the background and was able to get this object. Honestly, a great lens that usually allows you to get more creative. Easy setup and can be shot at home. But not just our main lens can get you creative. In video, we've got some features that you can get to become a content creating beast. We have 6 new video modes, one-click video modes. We call it one-click video modes because you can just turn on the function and click record. It will automatically edit your content and make this effect. Super easy. Let's take a look at montage of all 6 models. Besides those awesome one-click video features, we have something that is very cool. A dedicated microphone in the back that works alongside with your video recording. Using this awesome feature, audio zoom. When you're shooting a video on the Poco F3 and you want to zoom in, using the audio zoom function, it will follow the distance you zoom and capture sound from a distance. Honestly, very mind-blowing that we can make this feature in smartphone. Let's see a sample of it. This is the real beast camera with the AI triple camera powered by Snapdragon 870, including Tele Macro and 119-degree ultra wide, and the easy one-click video modes. That allows you to be super creative. Audio zoom supported by the dedicated microphone in the back. This is the Poco F3 Real Beast camera. Let's recap everything we have gone through so far. A flagship processor, Snapdragon 870, beast speed, LPDDR5 plus UFS 3.1, flagship RAM and ROM setup, 5G ready and also have Wi-Fi 6, giving you the best connectivity, a 6.67 inches dot display, featuring E4 AMOLED, one of the latest and best AMOLED technology on the market, which also supports 120 Hz refresh rate and 360 Hz touch sampling rate, giving you the smoothest gaming experience. X-axis linear motor for crisp feedback. Dolby Atmos dual speakers offering an immersive stereo experience. A 48 megapixel main camera that features a ton of software features. Audio zoom with a dedicated microphone. Then, powering all of this is a 4520 mAh that supports 33 watt fast charging. All of this in a 7.8mm thin device. Poco F3, the real beast. Let's take a look at this incredible device.
part that you've been waiting for. Price. With all the specs we talked about, how much can you get the Poco F3 Beast for? Now, if we take a look at the specs comparison with our competitors, you can see that in most features we stand more. Better processor, better display, flagship refresh rate and touch sampling rate. They're priced at around 1,70,000, a pretty big price tag. For the Poco F3, for our first option, the 6GB plus 128GB storage, we have a wild price at 57,999 rupees for all those features. And yes, we do have an early bird price. It starts at 55,999 rupees. Wow, amazing, right? For our high-end variant, for the 8GB plus 256GB storage option, we also have a great retail price of 65,999 rupees. Now, let's come back to this chart. With our specification, we are priced at less than half of our competitors' pricing. Absolutely insane value. Performance to value ratio is off the charts. Now, the Poco F3 will be available from the second week of April on all of our exclusive online partners, Daraz, MeStore.pk, OLX and Aircart. And the 8GB plus 256GB variants will also be available nationwide from the second week of April with the support of all our offline distributors, Airlink, SmartLink, Texerat and Fonzo. For the Poco F3, we will still have that free of charge one screen replacement within 6 months. So the Poco F3, the real beast, can be tamed for just 55,999 rupees for the 6GB variant, and for the 8GB variant 65,999 rupees. Flagship processor, flagship display, flagship experience. It's got it all. This is our flagship lineups today. The Poco F3 and Poco X3 Pro. 4G flagship and 5G flagship. Both awesome devices with amazing value. Everything you need and nothing you don't. This is all from my side today, but we are not ending it right here. We have 2 more engaging activities. So let's begin the gaming competition between the All-Star team and the Poco fan team. And to introduce them, I would like to call Mr. Khalid up on stage. Right. Thank you, Atif, for telling us more about these remarkable devices. And I'm sure now more than ever, you are intrigued to find out more about these phones. Poco aims to bring together revolution in technology and excels in giving its consumers the ultimate experience with innovations that truly matter. The Poco F3 is the real beast with its powerful performance power embedded with a flagship display design and immersive entertainment. Poco X3 Pro is exactly what you need and more. This phone has more speed with upgraded ultra-fast performance and will definitely leave you in awe. All right, let's move on to the fun part of the evening. I want to invite the All-Star team on stage one by one. Put your hands together for Ali Abbas, better known as Mastek. Sado Rehman, better known as Ducky Bhai. And of the metal gaming fame, Atik Ahmed. Last but not least, quite a Pakistan. Aslan Ash. Welcome, welcome, welcome. All right. With that, all our virtual viewers, get ready for what is said to be a power-packed gaming session with our All-Star Gaming team. So comment now and be in the running to win some exciting prizes. You guys ready? Are you guys ready? Let's go!
काउंटडाउन चल रहा है, काउंटडाउन। Come on, guys. Let's go. अबे यार इतनी हाइप अप। कौन है पोको 1 2 3 4? ओ ग्रेनेड कर रहा है कोई बंदा। ओए वाकई ग्रेनेड आया। ये लगा मजाक कर रहा है। प्लीज पहले किल नहीं। यस। कोई मेरा ख्याल से मेरा डिस्कनेक्ट हो गया। भाई ये देखना है या हम अपनी गपशप लगा लें? कमेंट करो जल्दी जल्दी। यार एक वक्त में देखो यार ये वाइट कपड़ों वाला बहुत आरामी है यार, मतलब अच्छे वे में। दो बंदे ये वाइट कपड़े क्या कस्टम है? ये मतलब खुद पकड़ सकते हैं? मैं नहीं पकड़ सकता। मैं आई थिंक इनके शायद अपना फोन है। ओए 2 किल होने वाले हैं। मैंने मार दिया टकी, टेंशन नहीं यार मज़ा आ रहा था वैसे। अच्छा जी, तो लाइव इवेंट हो गया हमारा, गेम देखने में मज़ा आ रहा था, लेकिन आप लोगों ने कहा कि एंड करते हैं, तो फिर आफ्टर डिस्काउंट 5K वॉज अ वेरी गुड ऑप्शन। मंसूर अख्तर कहते हैं छोड़ो इनको अपनी गपशप लगा। अच्छा भाई, सारे अपने ही भाई हैं यार, कोई बात नहीं। अच्छा तो यार अगर तुम लोग मुझसे ओपिनियन ले रहे थे, और जब ये लाइव सेशन जब चल रहा था कि कौन सा बेहतर है, अब कंपैरिजन करें अगर हम पोको X3 Pro और F3 का, तो F3 मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लग रहा है। प्राइस बहुत ज़बरदस्त आई है, मतलब इस प्राइस तो खैर पता ही थी, लेकिन वाकई अच्छी प्राइस है, इसमें कोई शक वाली। मतलब मार्केट में अगर हम इस प्राइस रेंज में देखो और स्पेसिफिकेशन को देखें, तो हमें कोई भी फ़ोन इस प्राइस रेंज के अंदर नहीं मिलता है इस स्पेसिफिकेशन को लेके। ओवरऑल मतलब यहाँ डिस्प्ले भी बहुत अच्छा काम किया। हार्डवेयर तो डेफिनेटली हमेशा की तरह शाओमी या पोको अपनी ब्रांड के अंदर करते ही हैं। बिल्ड को भी लेकर बहुत अच्छा काम किया। पोको X3 Pro में बैक में प्लास्टिक है, और उसमें जो है क्या कहते हैं ग्लास आपको मिलता है F3 के अंदर। तो मैं समझता हूँ पोको F3 जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, क्योंकि प्राइस डिफरेंस यहाँ पे जो है ना, अगर 6 GB की तरफ जाएँ पोको X3 Pro में, तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन अगर आप 8 GB वेरिएंट वाला लेते हैं, तो फिर इससे बेहतर है कि बंदा F3 की तरफ जाए, वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा। कोई सवाल आप लोगों की तरफ से है तो बताएं, मुझसे पूछें इस सीरीज़ के बारे में, और आप लोगों की क्या राय है। F3 बहुत अच्छा लगा मुझे, बिल्कुल कबीर मलिक F3 अच्छा है, इसकी प्राइजेस भी अच्छी दी हैं इन्होंने। और कंपैरेटिवली अगर हम 8 GB वेरिएंट देखते हैं पोको X3 Pro के मुकाबले में, तो इसकी प्राइस वाकई बहुत ज़्यादा अच्छी है। कोई सवाल है इस हवाले से तो बताएं, और कोई राय अगर लेनी है। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपको अनबॉक्सिंग भी मिलेगी, इन तमाम फ़ोन्स की मिलेगी। पोको X3 Pro की तो खैर मिल जाएगी जल्दी, F3 की भी मिल जाएगी जैसी अवेलेबिलिटी। पोको F3 जो अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है, जैसे अवेलेबल होगा मिल जाएगी अनबॉक्सिंग वीडियो और दीगर वीडियोज़ भी। कंपैरिजन किस किस के साथ देखने हैं वो भी मुझे बता दो, ताकि मैं कंपैरिजन के लिए भी रेडी रहूँ, क्योंकि उसके कंपैरिजन जिन जिन वीडियोज़ के साथ, जिन जिन डिवाइस के साथ होंगी, वो डिवाइस भी मुझे अवेलेबल करनी होंगी। तो एक बहुत अच्छा मौका है, मुझे यहीं पे बता दो, तो मैं अभी से अरेंजमेंट कर लेता हूँ। तो जैसे ही फ़ोन डिवाइस मेरे हाथ में आएगी, फिर सिर्फ दोनों को यूज़ करना होगा, और आप लोगों के लिए जो है ना इसकी कंपैरिजन लेकर आनी होगी। मंसूर अख्तर कहते हैं सैमसंग A52 लेना चाहिए या पोको F3 या रेडमी नोट है। पोको F3, A52 अच्छा फ़ोन है, लेकिन F3 मतलब अच्छा एक और चीज़ बताऊँ, अभी क्या है कि F3 हमारे हाथ में नहीं आया, जब हाथ में आएगा तो फिर हम सही से फैसला कर पाएंगे। लेकिन अगर हम स्पेक्स को देखें ना, जिस तरह हमें स्पेक्स दी गई हैं, तो ये बम है, मतलब बम। शाओमी ने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को कंप्लीट कैप्चर कर लिया। आपको क्या लगता है? बिल्कुल इसमें कोई शक वाली बात ही नहीं है इम्तियाज़। शाओमी जो है वो हम देख रहे हैं पिछले साल की तरह। अच्छा, इस साल शाओमी ने एक और चीज़ बड़ी अच्छी बताई क्या की, कि दो जो शिकायतें वो हमारी दूर दूर करती हैं। एक तो इन्होंने सुपर एमोलेड को जो है ना ऐड कर दिया है। दूसरा, फ़ोन की जो थिकनेस है, आपने देखा पोको F3 में इन्होंने बाकायदा हाईलाइट करके बताया कि थिकनेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा कम है फ़ोन की। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक एमोलेड पैनल यहाँ पे ऐड कर दी, सुपर एमोलेड पैनल हमें ऐड कर दी है, वो भी 4th जनरेशन के। तो जो डिस्प्ले एक्सपीरियंस है वो भी अच्छा हो गया, वेट को भी बहुत अच्छा मैनेज कर लिया है। तो अब मैं समझता हूँ कि यहाँ पे कुछ बचा नहीं है कि हम किसी इसके मुकाबले में दूसरे फ़ोन्स को देखें।
कबीर मलिक कहते हैं Redmi Note 10 Pro F3 या फिर A52। F3 पोको F3 की अगर बात कर रहे हैं तो पोको F3 ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। A52 ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें ऐसी हैं, जैसे बैटरी बैकअप में मैं खुश नहीं हूँ। आई एम सॉरी, उसके बैटरी बैकअप पे मैं खुश नहीं हूँ। दूसरा, उसका जो फिंगरप्रिंट सेंसर है ना, वो थोड़ा सा डिले है तो तंग कर देता है। और इसके अलावा अगर आप स्पेक्स देखें तो F3 तो मतलब उसके बराबर में भी नहीं बैठता जाके। इन दोनों का कंपैरिजन सर, अच्छा इन तीनों का कंपैरिजन ठीक है, इन तीनों का कंपैरिजन कर लेंगे। और नोट 10 प्रो कर लेंगे, स्टॉक कब अवेलेबल होगा। एफ थ्री के स्टॉक में थोड़ा टाइम लगेगा, और X3 प्रो जो है, पोको X3 प्रो, वो आपको कल से अवेलेबल हो जाएगा, मार्केट्स में आ जाएगा। मतलब अब आप परचेज करने जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। F3 में अभी थोड़ा एक आध दिन लग जाएंगे, एक दो दिन लग जाएंगे, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पे आपको स्टॉक का प्रॉब्लम आएगा नहीं, हारिस टेंशन नहीं लेनी है। मंसूर अख्तर कहते हैं इंशाल्लाह आफ्टर योर ऑनेस्ट रिव्यू आई विल बाय योर रिकमेंडेड फोन एज आई एम अ नॉर्मल गेमर, मोस्टली वॉच यूट्यूब वीडियोज़, एम डी प्ले नॉर्मल गेम्स। अच्छा, क्या नाम है मंसूर भाई, बिल्कुल इसका कंपैरिजन करेंगे इन तमाम फ़ोन्स का, और इंशाल्लाह हर एक फ़ोन की मैं स्पेसिफिकली जो रिव्यूज़ होते हैं, जो मेरे होते हैं, वो मैं लेकर आऊँगा, और बिल्कुल ऑनेस्टली होंगे, कोई इसमें शक वाली बात नहीं है। ज़ाहिर सी बात है ऑनेस्टी देंगे, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारी मेरी सजेशन के ऊपर आप लोग फ़ोन ख़रीद लें और बाद में जो है ना डंडा लेके मेरे पीछे घूमें, ये मैं कभी भी नहीं चाहूँगा। महमूद राही कहते हैं शाह साहब प्राइस क्या आया है, मैंने मिस कर दिया। ओहो यार, पोको X3 प्रो की जो प्राइस आई है 40,000 6 GB रैम और 48,000 रुपये 8 GB रैम। अच्छा, F3 की अनबॉक्सिंग कब आएगी शाह जी? इम्तियाज़ F3 की अनबॉक्सिंग में थोड़ा सा अभी अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है। पोको X3 प्रो की अनबॉक्सिंग तो जल्दी आ जाएगी, मुमकिन है कि कल आप लोगों को मिल जाए चैनल के ऊपर, और F3 जो है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। पोको X3 प्रो ज़्यादा बेहतर है कासिम रेडमी नोट 10 प्रो के मुकाबले में, लेकिन अगर आप पोको X3 प्रो का 8 GB वाला वेरिएंट लेते हैं तो मैं फिर कहूँगा फिर आप पोको F3 की तरफ जाएं। हारिस अली कहते हैं आपके रिव्यू का वेट है, प्लीज़ जल्दी कर दें, फिर मैं परचेज़ करूँगा। जी बिल्कुल हारिस, इंशाल्लाह पोको F3 की कंप्लीट रिव्यू की वीडियो आएगी अनबॉक्सिंग के बाद। उसके कैमरा की रिव्यू की तो मेरा ख्याल ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता गेमिंग रिव्यू ज़रूर करेंगे इस बार पोको F3 का। तो सारे जो भी हो जाएगा इंशाल्लाह, और कंप्लीट डिटेल रिव्यू में जैसे मैं हर एक चीज़ को एक एक मेंशन करके आप लोगों को बताता हूँ, तो क्या कहते हैं वो जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। अच्छा जी, पोको, ओहो मिस हो गया क्या, स्पीड से बहुत सारे मैसेजेस आ गए। रेडमी नोट 10 प्रो और पोको X3 प्रो जो मैं रिप्लाई कर चुका हूँ। पोको F3 में कौन सा चिपसेट है? पोको F3 के अंदर हमने देखा 870 चिपसेट लगा हुआ है। शुड वी गेट द सैमसंग A52 और द पोको? अच्छा मुस्तफ़ा भाई, सैमसंग A52 के अगेंस्ट पोको X3 प्रो की अगर बात कर रहे हैं तो वो भी अच्छा है प्राइस स्पेसिफिकेशन के लिहाज से अगर आप बात करते हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि फ़ोन आने दें, मैं पर्सनली यूज़ कर लूँ, वो मेरा फाइनल ओपिनियन होगा। इस वक्त जो ओपिनियन है वो पेपर बेस्ड जो कॉन्फ़िगरेशन है उस पर है, तो वो ज़ाहिर है फाइनल हो नहीं सकता। जब तक यूज़ नहीं करेंगे तब तक मैं फाइनल ओपिनियन इस तरह नहीं दे सकता। लेकिन ऑन पेपर की बात करें तो X3 प्रो ज़्यादा बेहतर है, और X3 प्रो के अगेंस्ट अगर आप उसके 8 GB वाले वेरिएंट की तरफ जाते हैं तो फिर पोको F3 जो है वो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा। चलें जी, क्लोज करते हैं फिर, मेरा ख्याल है और कोई सवाल ऐसा है नहीं, और फाइनल मेरा ओपिनियन भी मिल गया, आपके ओपिनियन भी मुझे मिल गए। ऑफलाइन प्राइस क्या होगी पोको X3 प्रो की? पोको X3 प्रो की ऑफलाइन प्राइस थोड़ा बहुत डिस्काउंट तो डेफिनेटली यहाँ पे मिलेगा, और देखते हैं कितना डिस्काउंट आता है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना ज़्यादा, मैक्सिमम अगर आएगा 2,000 रुपये तक का डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑफलाइन मार्केट, तो उससे ज़्यादा मैं नहीं एक्सपेक्ट करता। तो लेट्स सी, कल अगर मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो इसकी की इंशाल्लाह, तो उसमें मैं आप लोगों को डिस्काउंटेड प्राइस भी मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत शुक्रिया। और थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस वजह से हुई कि इन्होंने क्या किया कि इस बार जो लाइव है वो फेसबुक पे किया, और मैं अपने आप को रेडी करके बैठा था यूट्यूब के लिए, तो इस वजह से कि थोड़ा सा जो वीडियो एक्सपीरियंस जो इस तरह लाइव इवेंट में हुआ, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इस बार। पिछली बार से आप लोगों ने देखा कि अच्छा एक्सपीरियंस था, अगली बार इससे भी अच्छा एक्सपीरियंस आप लोगों को लाइव का मिलेगा। थैंक यू सो मच ज्वाइन करने का, और बस इसी तरह सपोर्ट करें, साथ दें, जल्द जल्द 1 लाख सब्सक्राइबर करें, तो फिर और ज़्यादा जो है ना मैं आप लोगों के लिए कंटेंट इंशाल्लाह इस तरह क्रिएट करूँ। दूसरी चीज़ ये कि रमज़ान की मैं बात कर रहा था कि रमज़ान में गिव अवे आ रहे हैं, 30 गिव अवेज़ इंशाल्लाह डेली एक गिव अवे होगा। अगर इन केस कोई एक दिन वीडियो मिस हो जाती है किसी वजह से, मसरूफियत की, क्योंकि रमज़ान में टाइमिंग के बड़े इशूज़ होते हैं, तो फिर अगले दिन वाली जो वीडियो होगी उसमें 2 गिव अवे रख लेंगे।
गिव अवे जो है वो 30 ही होंगे, 30 से कम नहीं होंगे, ठीक है। और उसका जो अनाउंसमेंट होगी, रिजल्ट होगी, वो फिर इंशाल्लाह ईद के दिन वो फिर मैं बता दूंगा। ईद के बाद मतलब ईद के फ़ौरन बाद, वैसे फ़ौरन बाद नहीं, ईद के दिन या दूसरे दिन ही रखेंगे, लाइव ही रखेंगे इसी तरह, और लाइव बैठ के उसके रिजल्ट निकालेंगे। तो इंशाल्लाह साथ रहें। बहुत इंटरेस्टिंग इस बार गिव अवे बहुत अच्छे मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। स्मार्ट वॉचेस भी हैं इस बार। थैंक यू सो मच। फिर होती है इंशाल्लाह मुलाकात। अपना ख्याल रखें। एक दफ़ा फिर आप सबका शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।